So they are the MCQs are selected in such a way कि जो theoretical concepts है या फिर numerical oriented questions, the type of questions which are asked in any of the entrance examination, they are picked up. So let's start. First one, the chemical reaction given 2AgCl plus H2 giving 2HCl plus 2Ag taking place in a galvanic cell under standard condition is represented by the notation. So cell representation या cell notation is being asked. Now to identify the correct notation, first thing is to identify the cathode and the anode. तो एक ही क्वेश्चन को लेकर मैं आपको डिफरेंट टाइप के और क्या क्या क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं वो बताऊंगा. So 2AgCl reacting with the H2 giving you 2HCl and 2Ag. Now if you observe here, the Ag plus is getting reduced and the H2 is getting oxidized. So H2 अगर oxidize हो रहा है मतलब this will become the anode and silver reduce हो रहा है इसका मतलब this will become the cathode. First thing is the identification of the anode and cathode. Second thing, if I ask you the type of the electrode at the anode, what is the type? Hydrogen in contact with its own ions H plus. What is the type of electrode? Is it metal-metal ion, non-metal ion, metal sparingly soluble salt electrode, or a redox electrode? Yes. So out of the four types, it's a gas electrode, non-metal ion type of electrode है. And cathode पे AgCl से Ag आ रहा है मतलब this is an example of metal sparingly soluble salt electrode. Metal sparingly soluble salt electrode. This is a second type of question which could be asked from the same reaction. Up, moving to the question cell notation. Notation में as a convention, the left hand side always represents the anode, which in galvanic cell is negative, and the right hand side represents the cathode, which is positive. Now, anode is always written on the left and it is a gaseous electrode. So we need to have an inert metallic wire for the conduction of electricity. So there should be platinum solid in contact with H2 gas with direct contact H plus ions aqueous. ठीक है. उसके बाद अगर मैं मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की बात करूं तो यहाँ पर तीन चीजें हम रिप्रेजेंट करते हैं. मेटल कोटेड विद स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट एंड डिप्ड इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग द अनायंस ऑफ द सॉल्ट. तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो देयर शुड बी अ मेटल सिल्वर in contact with its sparingly soluble salt AgCl and that in contact with the anions of the salt. अब इसमें generally indirect contact use करते हैं as a salt bridge. But if I just use the HCl solution directly, then I can just have a direct contact and this could be represented as HCl. So now from the analysis, which is the correct answer? Option 3. Option 3. ठीक है. Now इसी में और कुछ चीजें बता रहा हूं. With this cell representation, if I want to find the E naught of the cell, what is the formula? E of cathode minus E of anode. Cathode minus anode. So E naught of the cathode और cathode को represent कैसे करेंगे? AgCl reducing to Ag in contact with Cl minus and minus E naught of the anode. Anode को represent करेंगे H plus slash H2.
which under standard condition would represent the SHE, and the potential of SHE is arbitrarily taken equal to 0. Matlab the E0 of the cell is actually the E0 of the sparingly soluble salt electrode. Fine. So, Next, cost of electricity for the production of X liter H2 at NTP at cathode is X, rupees X. X liter volume है और rupees भी X बोला है. Then cost of electricity for the production of X liter oxygen gas at NTP at anode will be. Assume 1 mole of electron as 1 unit of electricity. How can you solve this? Now this is related with the Faraday's first law of electrolysis. इतना तो clear होगा. And I have said that for Faraday's first law related numericals, you should always start with a standard relation. What is that? 1 Faraday is equal to 1 gram equivalent. Super. Your problem is solved. Thought process to the point strike होना चाहिए. मतलब ये Faraday's first law है और इसको solve करने का simplest तरीका 1 Faraday 1 gram equivalent वाला है. Now we are having hydrogen gas and oxygen gas. तो उसका 1 Faraday वाला standard relation क्या है? So 1 Faraday liberates or deposits 1 gram equivalent of any substance. So for hydrogen, how much is the volume? एक Faraday कितना liberate करता है? 11.2 liters. Superb. And oxygen का? 5.6. 5.6. 1/4 of the standard volume. तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए. अब cost of electricity for the production of X liter hydrogen. तो मान लो ये X मैं लेता हूं 11.2 लीटर. इतने लीटर हाइड्रोजन के लिए X रुपीस है. रुपीस कितना है? X. Then cost of electricity for the production of X liter oxygen at NTP will be. तो same amount of electricity में oxygen 5.6 लीटर लिबरेट हो रहा है. तो अगर मुझे 11.2 लिबरेट करना है तो कितना कॉस्ट बैठेगा उसका? $11.2 लीटर के लिए X है ना. तो ऑक्सीजन के 5.6 लीटर से अगर 11.2 लीटर लाना है, by X by 2. Oh, to 11.2. So then we 2x. I have to get the double amount from this, na? See, 11.2 लीटर, 5.2 लीटर दोनों के लिए X रुपीस ही होगा ना भाई? हाँ कि नहीं? Yes, sir. क्योंकि ये सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए. तो अब उन्होंने पूछा है कि X लीटर हाइड्रोजन के लिए जितना अमाउंट लग रहा है, अगर X लीटर ऑक्सीजन मुझे लिबरेट करना है तो अमाउंट कितना होगा? 2x. ऑब्वियसली. तो अब सिंपल है ना. 5.6 लीटर ऑक्सीजन के लिए X रुपीस लग रहा है, तो 11.2 लीटर ऑक्सीजन के लिए कितना? 2x हुआ कि नहीं? Yes, sir. So this is Faraday's first law related numerical, and the best way to solve is 1 Faraday relation equal to 1 gram equivalent. Next, a current of 0.1 ampere was passed for 965 seconds through a solution of cuprous solution, and 0.03175 gram of copper was deposited on the cathode. Calculate the current efficiency for the copper deposition. We'll find weight by ZIT. And then take that as a fraction from the weight they have given over here.
वेट का क्यों फ्रैक्शन लेना है? करंट एफिशिएंसी पूछा है, तो व्हाई आर यू टेकिंग वेट? You करंट take the weight एफिशिएंसी and मतलब, So we'll find the current from that weight. हाँ एग्जैक्टली, कितना करंट एक्चुअल में यूज हुआ है और कितना करंट सप्लाई Yeah. किया था, उसका रेशियो ले लो, वो आपको एफिशिएंसी दे देगा। अब W इक्वल टू ZIT इज अ थियोरेटिकल फॉर्मूला बाबा। मैंने क्या बोला है, फैराडेज फर्स्ट लॉ है, तो यू ऑलवेज स्टार्ट विथ 1 Farad is 1 equal to farad gram is equivalent. 1 gram ज्यादा equivalent. अपना दिमाग मत लगाओ प्लीज, स्टॉप दैट। 1 farad, W equal to ZIT भी वही आंसर देगा, बट द सिंपलेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वे इज टू directly use the unitary method. So we know that 1 Faraday, which is equal to 96500 coulomb, liberates or deposits 1 gram equivalent of any substance. Now, इस case में how much will be 1 gram equivalent? 63.5 by 2. 63.5 by 1. Why 1, Kankshi? Cu plus. Cu plus. It's cuprous. नॉर्मली कॉपर आप हमेशा क्यूप्रिक के फॉर्म में देखते हो, इसलिए वी हैव अ टेंडेंसी टू टेक डिवाइड बाय 2, और ये कॉमन मिस्टेक है। कॉपर में या जो भी ट्रांजिशन मेटल में मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले मेटल्स है ना, उसमें हमेशा एक बार क्रॉस चेक करो कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट्स का बात किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस विल बी द ग्राम्स। तो नाउ फॉर I into 965 सेकेंड्स, यानी अब कूलम हो गया ये, अमाउंट था 31.75 into 10⁻² ग्राम, बराबर कि नहीं? Yes, sir. So now solve it. I into 965 into 63.5 equal to 31.75 into 10⁻² into 96500. ये दो जीरो 10⁻² से कम, 965 छू, ये हो जाएगा डबल, तो I हो जाएगा आधा। करेक्ट? Yes, sir. No. 31.75 into 10⁻³ आएगा, सॉरी -3 है ना? अरे हाँ कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So 0.1/2 आएगा, 0.1/2 यानी 0.05। तो इतना एक्चुअली लगा और इतना पास किया था, तो एफिशिएंसी कितना हुआ? 50%. 50% is the answer. Understood? Yes, sir. Next, the specific conductance of N/10 KCl at 25 degrees Celsius is given. The resistance of cell containing solution at the same temperature was found to be 55 ohms. The cell constant will be. Now, the formula which relates specific conductance, resistance, and the cell constant is. Constant is equals to kappa into resistance. It's bekar. Cell constant is equal to specific conductance or conductivity times the resistance. मैं इसको बेकार फॉर्मूला बोलता हूँ, B equal to KR. That's it. बस ये फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्लाई करना था। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी होता है which is 0.1 given times the resistance is, sorry 0.1 नहीं दिया है, it's 0.0112, so I can write 1.12 into 10⁻² into 55। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, you will get 0.616 and the unit is per length यानी सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब मान लो you are being asked the molar conductivity, then what is the formula we use?
kappa into 1000 by concentration. 1000 K by concentration. And is this the molar concentration or the normal concentration? Or it doesn't matter? It does matter Molar. because यहाँ molar conductivity. And अगर equivalent conductivity पूछा तो it is normal concentration. 1000 K by C equivalent, which is normality. तो यहाँ पर हम molarity लेते हैं और यहाँ normality लेते हैं. Now, how is normality and molarity related? C equivalent is C into N factor. Oh, normal. Sorry, N is sorry. equal to Polarity is equal to normal. Molarity into the N factor gives you the normality. मतलब the C equivalent is equal to Cm into the N factor. हाँ कि नहीं? yes, sir. So if I write this as 1000 K by C molarity into 1 by N factor, चलेगा क्या? मतलब can I write lambda equivalent यानी normal conductivity is equal to the molar conductivity upon the N factor? तो कई बार आपको यहाँ पर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में कन्वर्जन्स के लिए एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी. अब यहाँ पर भी नॉर्मल दिया था बट वी हैडंट यूज द कॉन्सेंट्रेशन. इन केस लैम्डा एम फाइंड करना होता तो फिर मोलैरिटी नॉर्मेलिटी का रिलेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता. बट यहाँ पर KCl है तो डज इट मैटर हियर? No. Because the n factor in this case anyways is equal to 1. तो फर्क नहीं पड़ेगा. इन केस कोई डाई बेसिक एसिड हो, डाई एसिडिक बेस हो या सॉल्ट में +2+3 वाले चार्ज के आयंस हो, तब आपका ये n फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. दैट्स द रीजन आई हैव जस्ट गिवन दिस रिलेशन. ओके, नेक्स्ट. A current is passed through two voltammeters connected in series. The first voltammeter contains X SO4 and second has Y2 SO4. The relative atomic masses of X and Y are in the ratio 2:1. The ratio of the mass of X liberated to the mass of Y liberated is. Now what is the highlighting word from the question? जिससे strike होगा क्या use करना? Connected in series. Very good. Connected in series matlab you have to use Faraday's second law. And what is Faraday's second law ka relation for entrance? According to Faraday's second law, the weight which is liberated or deposited is always proportional to its Equivalent. Equivalent. बस Faraday's second law मतलब W proportional to E. ज्यादा दिमाग को त्रास मत दो, to the point पढ़ो. कि Faraday's second law आया तो W proportional to E वाला अप्लाई करना है. अब आपसे पूछा है the weight of the X upon weight of the Y का relation. So ratio of this will be equal to equivalent of X upon equivalent of Y, which is equal to in turn molar mass of X upon the valency. Now what is the valency or the N factor for X? 2 because ये सल्फेट वाला सॉल्ट है तो ये 2 हो जाएगा. एंड Y के लिए My अपॉन 1. वेरी गुड. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Y का चार्ज 1 है, सल्फेट का -2 है तो इसका 1 हो जाएगा. अब Mx अपॉन My का रेशियो ऑलरेडी दिया है क्या? 2:1. So 2:1 and 1:2 बैलेंस हो जाएगा एंड द आंसर इज 1:1. खत्म. Understood? Yes, sir. Next, a current of 9.95 ampere following for 10 minutes deposits 3 grams of a metal. Equivalent weight of a metal is.
किसका क्वेश्चन है? 965. किसका क्वेश्चन है और क्या यूज करना है? First Faraday's First first law. law. एंड यू हैव टू स्टार्ट विथ 1 Faraday. One This Faraday is is one. and 1 Faraday is 96,500. 96,500 coulombs, which will always be equal to its. Equivalent weight. तो अब ये इक्विवेलेंट वेट ही तो ढूंढना है, तो इसके लिए व्हाट इज गिवन इज 9.95 एम्पियर फॉलोइंग फॉर 10 मिनट्स. तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करना नहीं भूलना, और उसके लिए 3 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है. बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एंड यू विल गेट द ई का वैल्यू. समझा? अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. नाउ 9.95 को सीधा 10 ले लो, 10 इंटू 10 100 हो गया, 100 इंटू 60 ये हो जाएगा 6000. तो ये 1 2 1 2, ये 3 2 जा, तो ये ऑलमोस्ट 1000 है. 1000 बाई 20 कितना हो गया अप्रॉक्स? 965 को बोला है ना मैंने, ऑलमोस्ट 1000 ले लो, 50 मतलब 50 के करीब एक ही आंसर दिख रहा है, तो आंसर 4 है. अगर 50 के आसपास 2-3 ऑप्शन दिखते हैं तो फिर थोड़ा मेहनत करना पड़ता. जब जरूरत ना हो तो मेहनत मत करो. नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ वेट deposited of metal X, Y, Z on passing electric charge in ratio of 1 to 3 respectively is 3 to 1. Then the ratio of equivalent weights for the above metals respectively is. थोड़ा वर्डिंग्स कॉम्प्लेक्स लग रहा है, क्वेश्चन सिंपल. द रेशियो ऑफ वेट डिपॉजिटेड, यानी वेट ऑफ एक्स इज टू वेट ऑफ वाई इज टू वेट ऑफ जेड, क्या रेशियो है? 3:2:1. 3:2:1. और ये कब रेशियो है? व्हेन द चार्ज वाज पास्ड इन द रेशियो 1:2:3. यानी जब 1 फैराडे पास किया तो x का वेट 3 टाइम्स ऑफ सम कांस्टेंट है, तो इसको मैं 3x ले लेता हूं, चलेगा क्या? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये x के लिए. y की बात करूं तो जब चार्ज कितना पास किया था? अरे भाई, 2 Faraday. 1:2:3 का मतलब 1 फैराडे 3x दे रहा है, y के लिए 2 फैराडे 2x दे रहा है, और z के लिए 3 फैराडे 1x दे रहा है. आता है समझ में? Yes, sir. Now to get the equivalent weights का ratio, all these weights should be for how many 1 Faraday? Faraday. खत्म, क्योंकि 1 फैराडे इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है. तो y के लिए 2 फैराडे 2x के बराबर है, तो 1 फैराडे 1x के X. बराबर, और इसका 1 फैराडे 1/3 ऑफ x के बराबर. यस और नो? Yes, sir. तो अब तीनों का वेट मुझे 1 फैराडे के लिए मिल गया. तो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ x इज टू y इज टू z, यही पूछा है ना? Yes, sir. is 3:1 is to 1/3, multiply throughout by 3, 9:3:1 is the answer. Option 4. Khatam. Is the concept clear? Yes, sir. The weights were given for the corresponding charges. You were supposed to find the equivalent weights. So we converted all the weights for 1 Faraday because we know that 1 Faraday is always equal to equivalent weight of any substance. बस वही रेशियो हमने ढूंढ लिया. Next, charge produced in butane oxygen fuel cell if 2 mole butane is consumed will be. Charge produced in butane oxygen fuel cell if 2 mole butane is consumed will be. Hint.
butane oxygen fuel cell, what will be the reaction? Butane. Combustion of butane. ठीक है, अब 2 मोल ब्यूटेन जब will undergo combustion, there will be some amount of oxygen which will be consumed. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now tell me, 1 mole oxygen जब प्रोड्यूस होता है तो how many Faraday's electricity is used? 4. वेरी गुड, 4 Faraday. और ये आपको हाफ रिएक्शन से मिल सकता है. 4OH negative undergoes the oxidation to form 4OH, and the neutral 4OH breaks down to give, neutral 4OH breaks down to give twice of water and oxygen. ये रिएक्शन पढ़ा होगा आपने कभी तो इससे क्या समझता है कि 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन लगा, यानी 4 फेराडे के बराबर चार्ज लगा. अंडरस्टूड? Yes. तो अब कंबशन में जितना भी मोल्स ऑक्सीजन है 4 फेराडे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हो गया. तो अब 2 चीज करना है, एक तो कंबशन रिएक्शन लिखना है और बाद में ऑक्सीजन के मोल्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है. लेट्स डू इट. सो वी हैव ब्यूटेन C4H10 which on combustion gives जितना कार्बन उतना CO2 and जितना हाइड्रोजन उससे आधा H2. That's how I balance. So 4 2s are 8 plus 5 13, आधा करके यहाँ पर बैलेंस करो. बट ये 1 मोल के लिए है ना, आपसे पूछा है 2 मोल ब्यूटेन के लिए. तो 2 मोल ब्यूटेन के लिए ऑक्सीजन कितना? 13. 13 मोल. और 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 4 फेराडे, तो 13 मोल के लिए 52. is the answer. Got it? Yes, sir. So 2 things are important to write the combustion reaction and then applying the relation of 1 mole oxygen equal to 4 Faraday. वैसे 2 mole hydrogen, 1 mole hydrogen will be produced by 2 Faraday. 2 Faraday. 2 Faraday and 1 mole chlorine 2 Faraday. 2 Faraday. again 2 Faraday. खाली ऑक्सीजन के लिए ये 4 का फैक्टर है. That is why this is very important. Next, consider the following galvanic cell as shown in figure. By what value will the cell voltage change when concentration of ions in anodic and cathodic compartments are both increased by a factor of 10 at 298 Kelvin? Super question है ये. एक galvanic cell दिया है और पूछा कि कितना amount से cell voltage will change when the concentration of the ions in the anodic and cathodic compartments are both increased by factor of 10. So how will you start this? Nernst equation. Very good. To the point, Nernst equation का question है ये. अब Nernst equation solve करने के पहले हमेशा you should write a correct Half cell reaction. half cell reaction of both anode and cathode, and then you will get a net reaction. बिना reaction के Nernst equation solve करोगे तो हमेशा गलती करोगे. So Nernst equation का question मतलब net reaction correctly लिखना है, उसके लिए half reaction लिखो पहले. Now what is the anode electrode over here? What type? Gas electrode. It's a hydrogen gas electrode. So at anode, tell me what will be the reaction? Hydrogen gas electrode का
H2 will give 2H plus 2E minus. 2E minus. H2 will lose 2 electrons to give 2H plus. Perfect. And on the cathode side, what is the type of electrode? Chlorine gas electrode. Chlorine gas electrode. And what will be the reaction at the cathode? Cl2E minus, 2Cl minus. Cl2 plus 2E minus. Now here there should be a reduction reaction. So chlorine and Cl minus मतलब the reduction will be Cl2 0 से Cl minus. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये रिएक्शन हाफ रिएक्शन लिखने में ही गड़बड़ करते हैं. So Cl2 gas plus 2 electron gives you 2 Cl negative. So now the 2 electrons lost would be gained and you will get the net cell reaction. The most important part of NERST is a correct net cell reaction. So you get H2 gas combining with Cl2 gas giving 2H plus and 2Cl minus. Understood? Yes, sir. रिएक्शन लिखने का दो फायदा है. एक, आपको जो n की वैल्यू है ना नर्स्ट इक्वेशन में वो मिल जाती है which is directly 2. एंड जो नर्स्ट इक्वेशन में हम रिएक्शन कोशेंट लिखते हैं उसके लिए प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन reactant concentration raised to the power equal to stoichiometry. And if the species is a gas, instead of the concentration, you replace it by the Pressure. partial pressure. Perfect. So help me with the Nernst equation to calculate the E of this galvanic cell. Nernst equation, E of the cell is equal to E naught Naught minus 0.05 n log to and the what is base N? 10 What is N? 2. Log to the base 10. product of reactant. अरे तो अभी बोलो ना H रिएक्शन plus आपके लिए raised to लिखा है. 2 Cl2 Cl minus raised to 2 upon pressure of H2 pressure of Cl2. Perfect. Now in case concentration pressure दोनों ही चेंज होता तो ये पूरा टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता. बट अब क्वेश्चन के हिसाब से ओनली द concentration is being increased. ठीक है. So this partial pressure will keep as 1 atmosphere only. When this is increased by 10, what will this concentration now become? Hello? 10 raised to 4. हाँ, ये 10 स्क्वायर और ये भी 10 स्क्वायर 10 raised to 4 हो जाएगा. तो log of 10 raised to 4 बाहर निकलेगा तो just 4. 4 और 4 half divide by 2. मतलब फाइनली बचेगा क्या? 2 ना? Yes. ना 4 by 2 है तो 2 ऊपर बचेगा. Is this clear? Yes. Yes, sir. तो ये होगा 4, ये होगा 8, 1, 1 और point. So the answer is चेंज कितना है इन दोनों में? 0.1184 का. अंडरस्टूड? Yes, sir. तो क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन था बिकॉज इसमें दोनों टाइप के इलेक्ट्रोड्स हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड का रिवीजन हो जाता है. उसके हाफ रिएक्शंस कैसे लिखने हैं, how to get the net reaction, how to use the Nernst equation. When there are concentration and the gaseous components, you have to take the partial pressure as well. If they are not changed, you can ignore it because they are at unit atmosphere under standard condition. तो ये जो टर्म लिखने का और n का वैल्यू है, ये दोनों चीज आपको इससे मिलती है. इसीलिए I always say Nernst equation के लिए you should be able to write the correct balanced net cell reaction.
That is the key to solve the Nernst equation. Next, a graph of molar conductivity of 3 electrolytes, NaCl, HCl, and ammonium hydroxide, is plotted against root of the concentration. Now, can you identify this relation, lambda m versus root C? DHO. It's DHO. क्या था DHO का full form? Dibihackyl Dibihackyl-Onsager equation. Can you help me with the equation? Lambda m is lambda m naught minus A root C. So when you plot the lambda m versus root C, you get a straight line intercepting the y-axis with a slope which is negative. And this is how you get the graph. अब if graph में आपको याद रहेगा तो जो linear relation है that is applicable for a strong electrolyte. Strong electrolyte. तो ये दोनों linear strong electrolytes का है and 3 is definitely for a weak electrolyte. ठीक है, तो the graph 3 is 100% for NH4. ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो रूल आउट हो गए. अब जो फर्स्ट और सेकंड, how would you differentiate which is HCl and which is NaCl? First one is more stronger or second one? Second one. First one is more stronger. First का slope देखो, first ज्यादा strong है. तो first HCl होना चाहिए कि NaCl? NaCl. HCl. HCl is a stronger acid, NaCl is a salt. तो HCl ज्यादा H+ concentration देगा और उसका जो dissociation है that will be comparatively more. वैसे तो दोनों strong electrolytes हैं. It's just that ज्यादा concentration या ज्यादा ions किसके बनेंगे when we talk about the dissociation. So HCl is a very strong acid. That's why its dissociation will be comparatively greater than NaCl. The first वाला होगा HCl, second वाला होगा NaCl, and that's why the answer is option 3. A question. Hmm. So when we were differentiating which one's a stronger electrolyte from the graph, did we compare the slope or the y-intercept? We'll compare the slope. Y-intercept तो यहाँ पर दिया भी नहीं है, तो उसको extend करके approximately आप समझ सकते हो, but the better way is the slope. Okay, sir. Because this A parameter in the DHO equation is actually determining the type of the electrolyte. Sorry, type of the electrolyte. तो आपका यहाँ पर जो ये curved line है ना, this indicates that the electrolyte is weak. और linear है मतलब it's strong. अब उसमें slope अगर difference है तो फिर stronger comparison हम कर सकते हैं. Yes, sir. Okay, sir. Thank you. Next, acetic acid is titrated with NaOH solution. Which of the following statement is correct for this titration? Conductance increases up to equivalence point, then it decreases. Conductance increases up to equivalence point, then it increases. First, conductance increases slowly up to equivalence point and then increases rapidly. A first conductance increases slowly up to equivalence point and then drops rapidly. Now, how you go about this? Okay. Acetic acid is what type of electrolyte? Strong or weak? Weak electrolyte. So it will form a salt and that will be a strong electrolyte.
हाँ, और So the equivalence point will then increase rapidly. why it would increase rapidly? So because it will dissociate, so Okay, ठीक है, good enough. Acetic acid and NaOH would undergo a neutralization reaction in which the weak and the strong, this is strong, weak acid and a strong base, which is giving you a salt. तो जैसे ही salt बनेगा, तो obviously the dissociation will be complete and the conductance will increase. ठीक है? अब initially at the start, the increase of the conductance would be slower because ये जो weak acid है, it will not dissociate completely. बराबर? Yes. But the strong base है, that is going to dissociate completely. Yes. तो मान लो मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के हैं और 100 मॉलिक्यूल्स NaOH के हैं. Now out of 100 acetic acid, will all of them get dissociated? No. No. मान लो इसका 60% dissociation है. Just assume. तो इसके 60 molecules ions के फॉर्म में होंगे. And 100 NaOH में how many will dissociate? 100. All of them. So initially, how many molecules of this salt will be formed? 60. 60 बनेगा. तो ये 60 तो खत्म हो जाएगा. But इस 100 में से there will be 40 left. 40 left. And this 40 NaOH is going to dissociate. Yes. Yeah, Completely or partially? completely. Completely. मतलब ये salt बनने के बाद NaOH के ions जो रहेंगे, that will drive the conductance to increase or decrease? Increase. Increase. तो equivalence point यहाँ तक है 60 बनने तक, वहां तक तो conductance बढ़ेगा और उसके बाद भी ये 40 ions की वजह से the conductance will increase. In fact, पहला जो increase है वो slow होगा because of the weak electrolyte undergoing a slow dissociation. एक बार इसका कहानी खत्म हो गया, फिर तो अपने पास सिर्फ strong है ना, और वो तो पूरा का पूरा dissociate करेगा. तो बाद का जो conductance होगा, that will be rapid increase. Have you understood? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. काफी अच्छा क्वेश्चन था in terms of the acid and base का titration. एक weak है और एक strong है. Next. An aqueous solution containing 1 molar each of gold, copper, silver, lithium ion is being electrolyzed by using inert electrodes. The value of standard potentials are as given. With increasing voltage, the sequence of deposition of metals on the cathode will be. What will get deposited first? And will be decided by SRP value. तो सबसे highest SRP value gold की है, फिर Ag. silver, then Cu and Cu and Li. so AU, AG, CU, and Li. The answer should be 4. Li won't get deposited. Li तो deposit होगा ही नहीं aqueous solution में, because when there is a competition between Li plus and H plus, which will undergo reduction? H plus. plus. तो ये तो metal कभी deposit होगा ही नहीं.
तो मोल्टन स्टेट में Li डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में H के नीचे जितने भी आयंस है दे विल नेवर एवर गेट डिपॉजिटेड, हेंस द आंसर इज ओनली Au, Ag, Cu. Understood? Yes, sir. Next, for the cell given, E naught of copper 2 plus is minus 0.34 volt. Then calculate approximate value of K equilibrium. What is the formula to find K equilibrium? E cell will be 0, so non-state equation. E naught is equal to 0.059. अरे बाबा, उसके बाद डायरेक्ट इक्वेशन है. हाँ बोलो. Yes, yes. 0.0596 upon n into log K. नस्ट इक्वेशन से डिराइव किया है, लेकिन ये डायरेक्ट याद रखना है. दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला. E naught of the cell is 0.0592 upon n into log of K equilibrium to the base 10. ठीक है. Now for this cell, what is E naught? Copper minus SHE, cathode minus anode. How much is copper given? 0.34. Negative or positive? Negative. Positive. So should I take negative या positive लो? Positive. Positive. इसका मतलब क्या होता है? Reduction. इसका मतलब is reduction होता है. Oxidation. This is Oxidation. oxidation. So we have to take as reduction. This is SOP, and what we take as a standard notation is SRP. SRP. और कॉपर SHE के ऊपर है, तो नेगेटिव दिया है, मतलब समझ जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है. तो इट्स 0.34 minus 0 which is 0.34. अगर साइन आपने नेगेटिव लिया ना तो पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा. यू विल नॉट गेट द करेक्ट आंसर. सो नाउ द कैलकुलेशन विल बी 0.34 इक्वल टू 0.0592 की जगह मैंने अप्रोक्सीमेटली बोला था 6 ले लो इसको, डिवाइड बाय 2 into log to the base 10 K equilibrium. ये हो जाएगा 0.03 and log of K equilibrium to the base 10 will be equal to 3.4 into 10 raised to minus 1 upon 3 into 10 raised to minus 2. ऊपर गया 10, 34 by 3. That is 11.33. हाँ कि नहीं? ऐसा. अब K equilibrium will be equal to antilog of 11.33. What is the answer? 11. 0.33 मतलब antilog of 0.33 is approx 2. और ये जो पावर है उसको देखकर ही आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो ना. So the answer is option 2. So this covers the concept of the calculation of equilibrium constant. Next, when a lead storage battery is charged, what happens? Amount Factual of acid decreases. चार्ज के टाइम पे डिस्चार्जिंग के टाइम पे सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड और रीजनरेटेड. डिस्चार्ज जब होता है, डिस्चार्ज कंज्यूम ऑब्वियसली. तो जब सेल चार्ज हो रहा है तो सल्फ्यूरिक एसिड इज, तुम लोग को रिएक्शन याद है कि नहीं? लेड स्टोरेज बैटरी का डिस्चार्जिंग वाला रिएक्शन हमेशा याद रखो. चार्जिंग में उल्टा कर देना. मैंने खाली डिस्चार्जिंग का अच्छे से बताया था ना. तो डिस्चार्जिंग में क्या होता है, द लेड एंड द लेड डाइऑक्साइड
combines with 2 moles of H2SO4 and deposits in the form of PbSO4. Along with that, water is formed. तो डिस्चार्जिंग में सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है क्योंकि द सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड. अब जब चार्जिंग करते हैं तो PbSO4 ब्रेक डाउन करके Pb और PbO2 देता है and it regenerates the H2SO4 thereby increasing the concentration. इनफैक्ट फंडा क्या था, जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उतना सेल का EMF बढ़ेगा, जितना घटेगा उतना सेल का EMF घटेगा. तो ऑब्वियसली चार्जिंग के टाइम पे क्या हो रहा है, EMF बढ़ेगा कि घटेगा चार्जिंग के टाइम पे? Increase. So sulfuric acid will regenerate. Next, the specific conductance of a saturated solution of silver bromide is K Siemens per centimeter. The limiting ionic conductivity of He plus and Br minus ions are X and Y respectively. Limiting ionic conductivity मतलब At infinite dilution. At infinite dilution. Perfect. और क्वेश्चन पूछा है, the solubility of silver bromide in gram per liter is, molar mass of HEPR is 188. Yes. Any hint? So molar conductivity is equals to kappa into 1000 by concentration. Perfect. Molar conductivity is equal to 1000 into kappa by the concentration. Molar conductivity. Fifth. Would be X plus Y. Molar conductivity will be equal to the conductivity of the ions. Sum of conductivity of the ions. तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x plus y good enough equal to 1000 into k by now the solubility of the salt is nothing but its concentration. मतलब यहाँ पर ये s हो जाएगा, but ये जो solubility है that will be in what unit? Mole per dm3. मोल पर लीटर या मोल पर dm3. अब मोल को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? Multiply by molar mass. बस. तो यहाँ पर जो solubility है that is मोल पर dm3, बट मोल को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए I should multiply by 188. तो बेसिकली ये जो solubility आएगी ना, this will be in mole per liter, right? 1000 k by x plus y. और ग्राम पर लीटर में 188 किधर जाएगा, ऊपर कि नीचे? ऊपर. This is mole ना, and mole is given mass upon molar mass. तो molar mass नीचे आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे वो जाएगा ऊपर, इसलिए आंसर होगा थर्ड. समझा? Yes, sir. Yes, sir. Number of electrons involved in the electrode deposition of 63.5 gram copper from a solution of CuSO4 is? Number of electrons involved. Faraday's first law. Very good. So tell me, how do you proceed? 1 Faraday is 63.5 by 2. So 60. ये तो वेट का बात किया आपने.
So then 63. Gives you electron. 1 mole of electrons. Will give you 2, will be corresponding to 2 Faraday. 2 And 2 Faraday is 2 equal to how many? Na. 2 moles of electrons. 2 moles. And that is in turn 2 into Na electrons. The answer will be 12 into 10 raised to 23. Good enough. Next, the limiting conductivity of NaCl, KCl, and KBr are given respectively. The limiting equivalent ionic conductance for Br minus is given. So limiting equivalent ionic conductance for Na plus ion would be, hint, So 3 अलग salts के limiting conductivities दिए हैं. Yes, Kangshi. you find the ionic conductance of K, and from that you find Cl, and then from NaC you'll find Na. Kohlrausch law. सीधा कोलरॉश लॉ अप्लाई कर लो. Kangshi, you can get the answer by that, but थोड़ा लेंदी हो जाएगा. So I was talking about Kohlrausch law only. Sorry? I was talking about Kohlrausch. हाँ, you were talking, but आपने Yeah. K निकाल के फिर Na निकालने बोला ना. Yeah. But anyways, कोलरॉश लॉ से यूज सॉल्व करना है. So NaCl, KCl, and KBr. What is the equation which I would use? कोलरॉश के लिए. NaCl plus KBr minus KCl gives NaBr. Very good. NaCl plus lambda m naught of KBr, and then you subtract lambda m naught of KCl, तो आपको मिलेगा lambda m naught of NaBr. अब ये lambda m naught of NaBr strong electrolyte के लिए I can write lambda m naught of Na plus and lambda m naught of Br minus. और यही तो आपको पूछा है. नहीं, ये नहीं पूछा है, ये आपको पूछा है. तो इसका वैल्यू आपके लिए 78 है, इज इक्वल टू NaCl का वैल्यू 126.5 प्लस KBr का वैल्यू है 151.5 और माइनस करेंगे 150. इसका आ जाएगा 1.5, वो ऐड करेंगे इधर 128 और 128 माइनस 78 वुड गिव यू आंसर एज 50. आंसर है ऑप्शन 4. खत्म. क्लियर है? Yes, sir. Next, the standard oxidation potentials. The moment you see oxidation potentials as standard notation, you have to reverse because we always use SRPs. So E naught for the half reaction are as given. The EMF for the cell would be, so the E naught for the cell will be equal to E naught of, which is the cathode? Fe2 plus 2 Fe. Fe2 plus Fe. Very good. Minus, it will be Zn2 plus Zn. SRP के फॉर्म में ही लिखते ना इधर. And now the value of Fe which needs to be substituted will be minus 0.1. And minus of minus 0.76. So basically your calculation would be 0.76 minus 0.41, which will give you 0.35 volt plus as the answer. साइन में गड़बड़ किया तो फिर आंसर 1 भी दिखेगा आपको. This is a very good question. A sequence of some reactions given with their potentials mentioned, you have to find the E naught for the ClO3 minus converted to Cl minus. So E naught in the given figure is about how much? So how do you do this?
कुछ भी स्ट्राइक नहीं हो रहा है? Sir, we write a balanced equation, I guess. We should write the balanced equation. And what is important thing with which you can balance the equation? किससे balance करोगे? What factor? What parameter? जब half reactions लिखते हो तो उसमें what is the main factor by which half reactions are written? Number of electrons reduced. Number of electrons, bus, and that number of electron in turn is related to the change in Oxidation state. Khatam. That's it. So hint to solve the question is change in oxidation state. So ClO3 negative is the chloric acid plus 5, hypochlorous plus 1, neutral chlorine 0 and minus 1. So to write the first reaction, I will write ClO3 negative changes to ClO negative by gaining 4 electrons. 4 electrons. Then the ClO minus will change to half of Cl2 from +1 to 0 by Gaining 1 electron. and then the half Cl2 will change to Cl minus by 1 electron. gaining 1 electron. Now overall reaction is having ClO minus acting as, इसको क्या बोलते हैं? Intermediate. Intermediate. And half Cl2 is also the intermediate. So net ClO3 minus says Cl minus is 6 electron. वो तो डायरेक्टली भी देख सकते थे, इतना मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज +5 से -1 था. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Now एक चीज आपने पढ़ा होगा that EMF is an intensive property. पढ़ा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. So if I multiply or divide or do any mathematical operation to the reaction, the EMF changes or doesn't change? No, it doesn't change. So I need some extensive property to deal with this type of conversions. And for Free that we have a energy. relation of Entropy. Delta G. entropy, Gibbs Enthalpy. free. Gibbs free energy, Yeah. which is equal to minus NFE naught. पढ़ा है ना ये? Yes, sir. तो इसका E naught और इसका डेल्टा G naught ऐसे मैंने लिखा था, है ना? ऐसे न्यूमेरिकल्स किए हमने. तो इसका E naught कितना दिया है? 0.54. 2.54. 0.54. So delta G naught will be minus 4 into F into 0.54. Yes or no? Yes, sir. Then इसका EMF 0.45 है, तो इसका होगा -1 into F into 0.45. इसका 1.07 है, तो इसका -1 F into 1.07. इसका मुझे ढूंढना है, E naught दिया है, तो it will be -6 into E naught. Sorry, 6 into F into E naught. Correct. Yes, sir. Now this plus this plus this equal to this. F सब में कैंसिल हो जाएगा, एक ही अननोन है, E naught अब फाइंड कर लो, आंसर मिल जाएगा. बट मेन फंडा क्या है, डायरेक्टली ऐड करके आपको आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट वुड बी रॉन्ग. टू वायलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी. आता है समझ में? Yes, sir. So 54 into 4 is
2.16 मतलब minus 2.16 minus 0.45 minus 1.07 equal to minus 6 E naught. 2.16 and 0.45 and 1.07 divided by 6. 0.61. Understood the question? Yes, sir. बहुत important है. Whenever the EMFs are to be applied with any mathematical operation, you have to convert this intensive into the extensive property and then only do the calculation as per the thermodynamical factors. ठीक है? Next, how much will be the reduction potential of a hydrogen electrode change when its solution initially at pH equal to 0 is neutralized to pH equal to 7 at 25 degrees Celsius? Initially pH equal to 0, H plus is 10 raised to 0. 1 molar standard. जब 7 कर दिया तो H plus का concentration becomes 10 raised to minus 7. So to find the reduction potential change, again we have to use Nernst equation. and Nernst equation अब electrode के लिए use किया जाएगा, not for the cell. तो cell के लिए cell reaction लिखते हैं, electrode के लिए you need to write the half cell reaction. So what is the half cell reaction you should write for the hydrogen electrode? Hydrogen electrode का 2H half plus reaction. 2H plus 2 electrons gives H2. Can I write ulta? Can No, I since write it's ulta? reduction potential. Very good. बस ये एक ही चीज याद रखनी है कि अगर नस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोड के लिए यूज किया जा रहा है, the half reaction has to be a reduction reaction. Now the आगे का part is simple. The E of the electrode will be equal to E naught of the electrode minus 0.06 by number of electrons are 2 into log to the base 10 partial pressure of hydrogen upon the H plus concentration का square. E naught of electrode तो 0 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है. तो इट इज माइनस 0.03 into log to the base 10. प्रेशर के बारे में बात नहीं की है तो 1 और ये हो जाएगा 10 raised to minus 14, ऊपर जाएगा plus 14, बाहर आएगा 14. So it will be minus 0.03 into 14 which is equal to minus 0.42. And it is decreasing or increasing? Decreasing. So the answer is 4. Clear? Yes, sir. That's it. This completes the 20 MCQ series for electrochemistry. I hope it was helpful and gave a revision of almost all the concepts. If you observe, starting from conductance and molar conductivity through the Kohlrausch law, then the cell constant Bécquer-Walla relation, Faraday's first law, second law, then galvanic cells ka Nernst equation for the cell, for the half cell, and then later part of the chapter had the factual reactions जो आपको अलग-अलग cells के लिए ध्यान रखने हैं. तो वो part के questions मैंने नहीं लिए because they are factual and can be understood by just going through the reactions. So main concepts जो भी start to end था, I have covered the MCQs from there. So Fine. can you shift to one of the previous slides, Debye-Huckel sum, the graph? DHO.
हाँ. So I still think the slope of 2 is greater. So I think 2 Yes, should be HCl. 10 वैल्यू अगर देखे the तो slope of 2 is tan थीटा का अगर वैल्यू देखे द स्लोप, हाँ लेसर स्लोप, 1 का स्लोप लेस है, 2 का स्लोप ज्यादा है. So 1 should be NaCl, 3 should be HCl. Yes. but also in this question, so NaCl and HCl, like NaCl is also strong electrolyte, so it will also They're definitely completely both strong electrolytes, complete dissociation होगा, but जो strong acids और strong base होते हैं, उनका जो अगर हम K या Kb की values देखें as compared to the equilibrium constants for these salts, the K or Kb values for the strong electrolytes are always much higher as compared to the salt का K values, equilibrium values. तो उससे clear होता है कि the dissociation part of the stronger acid or the stronger base as compared with the salts is comparatively higher. It is only comparatively. okay. ठीक. Anything else PPT. apart from the questions which we have discussed? Huh? Can you send the PPT? Yeah, I will do that. Thank you. So there were doubts in the paper. I'll discuss them. I'll take one session maybe on Sunday because कल और परसों थोड़ा pack है schedule. Okay, So I'll take sure. that.